Guys, welcome back to Codelab, and in today's video we will make a colorful pattern in Scratch. So for that I have opened scratch.mit.edu. Then I will go to sprite panel and choose a sprite which is a crystal which draw the pattern. So I have chosen this crystal. So I will go to extensions and choose this extension pen. So I will go to events and add when green flag is clicked. I will zoom in so you can see. Then हमें controls पे जाकर forever loop ले लेना है. Then पेन पर जाकर हमें ले लेना है erase all. Then pen up. Then हमें लेके जाना है. So ऐसे तो हमारा कोड वर्क करेगा बट हमें चाहिए कि जो हमारा क्रिस्टल है वो सेंटर पे हो. तो इसके लिए हमें इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज चेंज करनी होगी. तो चेंज करके हमने और कंट्रोल मोशंस पर जाकर गो थ्रू एक्स 0 एंड वाई 0 0. तो चूज कर लिया. देन हमें पॉइंट इन डायरेक्शन 90 ले लेना है. देन इसके बाद हमें अगेन पेन पर जाना है और उससे पेन डाउन. इसके बाद हमें पेन डाउन कर देना है. देन हम दो वेरिएबल्स बताएंगे विच इज द एंगल एंड स्टेप. So our step and angle is there. So we will choose set angle and again set angle. So हम इसे चेंज भी कर देंगे. स्टेप टू 0 है, एंगल तो नहीं हमारा पहले से. तो हम जाएंगे. अब हम स्टेप जो हमारा 0 से हमें चेंज कर देना है उसे 10. वो चेंज कर दिया. और एंगल्स पे के लिए हम ऑपरेटर्स पर जाएंगे और पिक रैंडम 1 to 10 ले लेंगे. 1 को हम चेंज कर देंगे. देन 360. तो 360 मैंने कर लिया है यहाँ पे. देन हम इसके बाद रिपीट अंटिल का ऑप्शन ले लेंगे. क्योंकि हमारा कंट्रोल में होता है रिपीट अंटिल का ऑप्शन यहाँ पे आ गया. टचिंग एज, इससे जो हमारी ये बाउंड्रीज है वो तब तक टच करेगी. देन हम मोशंस पर जाकर मूव 10 स्टेप्स और देन टर्न राइट. तो मूव 10 स्टेप्स को भी हम हटा देंगे और टर्न 15 डिग्री का राइट. देन हम जाएंगे वेरिएबल्स पर. स्टेप वाले ऑप्शन पे हमें स्टेप डालना है और डिग्री वाले पे हमें डालना है एंगल. देन हमें इसके बाद ही ऐड करना है चेंज स्टेप बाय 2. तो हम ये हमारा चेंज एंगल बाय 1 जिसे हमें चेंज कर देना है चेंज स्टेप बाय 2. देन इसके बाद हमें लाना है चेंज पेन कलर बाय एंड नंबर. तो ये भी हमारा मिलेगा पेन वाले टॉप में. सो और चेंज पेन कलर बाय 10 यहाँ पे है. सो आपको कोई भी लेना है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 25 ले रही हूँ. So let's run it. So as you can see, it's making so different patterns and it's looking so colorful. So we will do some experiment with it. So I will change its value to 50. Let's stop it and open. So
As you can see, it's making so beautiful patterns. It's making it. So let's take it as one only. Let's see what will happen. And again, stop it and again start. Yeah, you can take it's making a different pattern, a different colors. Here is the star. So here it's making a flower, another flower, and it's like a triangle which makes a flower. So you can see when it's touched the edge, the different pattern is forming. So this is for today. Thanks for watching.